Good morning, students. For 11th class history subject, in our previous video, we knew about the emergence of early people and how they learned the uses of tools, fire, and wheel also, and how the archaeologists knew about them and knew from the fossils, cave paintings, and stone tools and the activities of early human. We saw that in Neander Valley, a workman found a skull which was million years old and skull, but he couldn't understand about the skull, and he took it to the Carl Fulhart, the schoolmaster, who was the schoolmaster, but he was very interested in all these archaeologist things. So but he couldn't understand properly about the skull, and then he carried it to the famous professor of anatomy, Hermann Schafferson. And when he discovered and when he found out about the skull, but the scholars didn't believe on him, the statement of the Hermann Schafferson. But after 3 years later, it means 3 years later, 1859, he said that, and here he wrote in his book, and his book name is Species of the Origin of the Species. And in his book he said that the human had evolved from animals a long time ago. Then they believed the existence of early human beings, and then after the statement of the Charles Darwin, the scholars believed upon that the early people have the existence on the earth. Now we discuss about the important stages in human evolution. You have seen the picture, and in which we have the 4 stages of human. First, primates emerged around 36 million years ago. Second, hominids evolved around 24 million years ago, and hominids emerged around 5.6 million years ago, and modern human like us originated about 1,60,000 years ago. So you can see 4 different ages with different name, and their picture you can see. First man who was walked with 2 legs and like quadrilaters, they walk with 4 legs, and from the same time same type you can see the first picture. And after the time passes, the human being uses 2 legs for walking and 2 hands for the other work. So after as the time passed, they new invention, and they uses their all these things and for the another work. In the first, you have seen the primates emerged around 3.60 lakh or 36 million years ago. So what is the meaning of primates? Primates are a subgroup of a larger group of mammals. They includes monkey, apes and humans. जो प्राइमेट्स जो थे उन लोगों को इनका जो एक सब ग्रुप में से निकले थे, और इन्हीं सब ग्रुप में इनको कहा जाता था। कैटेगरी थी मैमल्स की, है ना, जो बेबी बॉर्न कर सकते हैं वो कहलाते हैं मैमल्स। तो वो एक ऐसी कैटेगरी थी मैमल्स की, एंड दिस कैटेगरी वाज इमर्ज्ड इन एशिया और अफ्रीका. And then the second group, hominids, and the group of hominids emerged from the subgroup of the primates, and it is called hominids, and this includes apes, and much later, about 5.6 million years ago. And we have evidence of the first hominids before the 56 lakh years before. So like this we have the 4 stages: primates, hominids, and modern human. And in this picture you see that the primates are looking like the first picture, and they complete this journey, and and now in the modern age, before the 1,60,000 years ago, man like the last picture. So you have the skull, and you have seen this in this skull a different shapes. In picture A belongs to an ape.
जस्ट लाइक लुकिंग एन ऐप मीन्स जैसे आप जैसे वानर या जैसे आप बोल सकते हो बंदर वन मानुष जैसे बोलते हैं वो चीज़ होती है. इन बी पिक्चर इट बिलोंग्स टू स्पीसीज नॉन ऑस्ट्रेलोपिथेसिकस. जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस होते थे उनकी जैसा ये दिखता है. ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है वो मैं आपको अभी समझाऊंगी बाद में. एंड नाउ दिस पिक्चर सी बिलोंग टू द स्पीसीज नॉन एज होमो इरेक्टस एंड picture D belongs to a species known as Homo Spanish. Means all these four pictures, and but we look the different shapes and size of the skull. And so let us list out as many different similarities and differences that you notice at looking carefully at the brains, case, jaws and teeth. You can see the different types of jaws. उनका जो जबड़ा है, उनके जो टीथ है, टीथ का शेप है, वो सब इनमें क्या है आपको डिफरेंट दिखाया गया है. नाउ प्राइमेट्स कौन होते थे? जो सब ग्रुप है ये, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मैमल्स. दिस इंक्लूड एप्स, monkeys and human also, and they have some special features. What they have the special features? The first special feature was हेयर ऑन द बॉडी. मीन्स उनकी बॉडी पर क्या होते थे? बाल ही बाल होते थे. सो फर्स्ट जो इनका फीचर है वो फर्स्ट फीचर है हेयर ऑन द बॉडी. सेकेंड फीचर्स mammary glands among females to feed their babies. Third feature long gesture period following birth, and then for ability to maintain a constant temperature. उनमें ये एबिलिटी होती है कि अपने आप को constant temperature में अपने आप को किस तरह से सूट कर सके उसमें. और they have the different type of different types of teeth and ability to maintain a constant body temperature. तो इस तरह से इनमें प्राइमेट्स जो होते थे, प्राइमेट्स सबसे सबसे पुरानी आप बोल सकते हो 36 मिलियन ईयर्स अगो. तो वो जो होता था उसके बारे में बात होती थी. उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि आपने जो ये देखे हैं स्कल्स देखे हैं, ये जो आप इसके प्राइमेट्स की आप देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स हम देख रहे हैं, उनके बारे में हमने जाना. उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्राइमेट्स हैं उसके बाद प्राइमेट्स से ही होमिनाइड्स और होमोनिड्स निकल कर आए हैं. होमिनाइड्स किसे कहेंगे और होमोनिड्स किसे कहेंगे, इसको हम देखते हैं. Hominids evolved around 24 years ago. 24 years ago means while hominids जो थे have evolved from hominids and they share certain common feature. Means from the primates emerged hominids and from the hominids emerged hominids. प्राइमेट से होमिनाइड आए हैं और होमिनाइड से ही होमिनिड्स निकल कर आए हैं. ये ही लोग आगे से आगे धीरे धीरे परिष्कृत होकर बढ़ते गए हैं और इन्हीं के एजेस में चेंजेस आए हैं. सो सबसे पहला आपने कहा प्राइमेट्स. उसके बाद होमिनाइड्स evolved around 24 million years ago and hominids emerged around 5.6 million years ago. So between 24 million years ago and the 5.6 million years ago, there emerged a subgroup amongst primates called hominids. hominids किसे कहा गया है? hominids कहा गया है जो इस एज के बीच में है ना 24 मिलियन ईयर अगो और 5.6 मिलियन ईयर अगो के बीच में जो भी प्रजाति आई थी उन प्रजाति में बहुत कुछ चेंजेस था. उन्हें किस नाम से बुलाया जाने लगा? होमिनॉइड्स कहा जाता था. ठीक है. और फिर उन्हीं से जो 5.6 मिलियन ईयर्स अगो के बीच का जो पीरियड था बिटवीन 5.6 मिलियन ईयर्स अगो एंड 1.6 मिलियन ईयर्स अगो होमिनिड्स हैव इवॉल्व्ड. और उन्हीं से फिर होमिनिड्स इवॉल्व हुए हैं, उन्हीं से होमिनिड्स विकसित हुए हैं. और उसके बाद जो है वो हमारा मॉडर्न पर्सन है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, वो आपके इसमें आता है. अब आपको समझ में आना चाहिए होमिनिड्स और होमिनॉइड्स में डिफरेंस क्या है. निकले थे मतलब इमर्जेंस उन्हीं से हुई है, लेकिन ये इमर्जेंस में डिफरेंस इतने सालों में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है वो क्या डिफरेंस आया है इन दोनों में. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द डिफरेंस बिटवीन द होमिनिड्स एंड होमिनॉइड्स. So you have to see in the picture hominids have the brain was small and longer period of infant development and dependency, do not have a tail, उनके पूँछ नहीं होती थी, and used to walk on 4 legs means वो 4 पैरों पर चला करते थे. उस समय तक उनमें इतना विकास नहीं हुआ था. they didn't have any development to walk on 2 foot. Now
होमिनिड्स, होमिनिड्स में क्या डिफरेंस था? होमिनिड्स हैव द ब्रेन वॉज बिग, उनका ब्रेन कैसा होता था? बिग था, ठीक है। एंड देन ये दे स्टूड अपराइट एंड वॉक द लास्ट 2 legs, तो वो खड़े होकर सीधे चल सकते थे और अपने पीछे के 2 पैरों पर खड़े होकर वो चल सकते थे। एंड दे वर स्पेशल इन देयर हैंड्स, उनके मेन चीज़ क्या थी? वो स्पेशल था उनका हैंड। एंड विद द हेल्प विच दे कुड मेक वेपन्स एंड यूज़ दैम, और उनको क्या कर सकते थे? वो उनसे वेपन बना सकते थे, क्योंकि उन 2 हाथों से 2 हाथ फ्री थे, तो उन 2 हाथों से वो अपना फ्री होकर कुछ भी काम कर सकते थे। वो सिर्फ 2 फीट पर वो चल सकते थे। सो होमिनिड्स have an upright postures and bipedal locomotion, means bipedal locomotion means walking on 2 feet. And there are also marked difference in the hand which enables our making the use of tools. We will examine the kinds of tools made and their significance more closely later. Means अगर हम एग्जामिन करें उनके टूल्स को, तो वो टूल्स में भी डिफरेंस क्या था कि जो होमिनाइड्स थे उनके टूल्स बहुत ज़्यादा शार्प और शाइनिंग वाले नहीं होते थे, बट होमिनिड्स जो थे दे हैव द शार्प एंड जो शाइनिंग जो टूल्स होते थे उनके वो टूल्स जो होते थे मेटल से बने होते थे, वो शाइन करते थे। तो इस तरह से इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो इस तरह का डिफरेंस था होमिनॉइड और होमिनिड्स में। एंड इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली so that you can write on in the exam easily. Hominid and hominoids, they are a family called hominid. Hominid is a family member called hominids, and his family includes human being of all form. You can see the picture there. First picture is like on animal or monkey walking on with 4 legs, and then slowly as time passed and the person was used their 2 hands and with for the weapons and for the tools and how they use the computer now last. So these 2 lines of evidence suggest an African origin for hominids. First, it is group of African apes that are most closely related to hominids, and second is the earliest hominid fossils which was belong to the genus Australopithecus. अब इसमें हम देखते हैं जो hominids हैं, hominids ने अपनी जो स्पीसीज है, अपनी जो प्रजाति है उसको उसने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। तो ही है द होमिनिड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फर्स्ट ऑस्ट्रेलोपैथिकस एंड सेकंड होमो, ठीक है। तो होमिनिड में ये जो चेंजेस हुए हैं वो 2 चेंजेस में हुए हैं। तो होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस नोन एज जेनस of which Australopithecus and Homo are important. होमिनिड से ही 2 स्पीसीज और निकली है, और उन 2 स्पीसीज या सब डिवाइड जो हुआ है उनको हम कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और सेकंड था आपका होमो। सो दीज आर द 2 डिवाइडेड ग्रुप ऑफ होमिनिड. ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज, but the major difference between the Australopithecus and Homo relate to brain size, jaws and teeth. So mainly differences between the hominids and hominoids, or we can say the Australopithecus or Homo. The main difference is the brain size, jaws and teeth. उनका जो सिर का साइज बोल सकते हो आप, वो छोटा बड़ा कैसा था वो डिफरेंस था उनमें। मेन जो जॉज है जिसको आप जबड़े बोलते हो वो भी उनमें डिफरेंस था, हम देख सकते हैं उनको डिफरेंसेस को। और जो टीथ होते थे उन टीथ में भी डिफरेंसेस था, जो अलग अलग तरह के टीथ होते हैं, इनके बड़े या किसी के छोटे इस तरह के होते थे। द फॉर्मर हैज़ अ स्मॉलर ब्रेन साइज, फॉर्मर मीन्स ऑस्ट्रेलोपैथिकस। जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है उनका ब्रेन साइज कितना होता था? छोटा होता था। हैवियर जॉज, उनके जॉज क्या होते थे? हैवियर एंड लार्जर टीथ देन द लैटर मीन्स होमो. So we have some features here of the Australopithecus. The name Australopithecus comes from a Latin word austral, the meaning austral meaning southern, and the Greek word pithecus meaning ape, means southern ape, means साउथ इंडिया का जो दक्षिणी का जो एप जिनको आप बोल सकते हो बंदर, वो हो सकते हैं। तो इसीलिए इनका इस तरह से इनका नाम रखा गया। जनरली ये कहाँ मिले आपको? अफ्रीका उस साइड में मिले इसलिए। सो दे हैव फीचर्स ऑल्सो, दे रिमेन मैनी फीचर्स ऑफ एप्स, मतलब उनकी वानरों जैसी उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ देखने को मिल सकती है। दे हैव अ स्मॉल ब्रेन साइज, हैवियर जॉज एंड लार्ज टीथ, एंड दे हैव द फॉसिल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम
जो इनके जो फॉसिल्स मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? ऑल्डवे जॉर्ज इन ईस्ट अफ्रीका। अफ्रीका में ऑल्डवे जॉर्ज नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर ये आपको मिले हैं। और आपकी अपनी जो बुक है उस बुक में आपको एक पिक्चर भी है जो इसमें आपको लास्ट में दिखाई जाएगी। उस पिक्चर में आपको दिखाया जाएगा किस तरह से जो रिफ्ट वैली होती है, उन रिफ्ट वैली में ईस्ट अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है वहाँ पर मिले हैं। एंड वन ऑफ द एरिया ऐसा है फ्रॉम विच ट्रेसेस ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री हैव बीन रिकवर्ड, और वहाँ से हमें मिले हैं अर्ली ह्यूमन के कुछ न कुछ बोल सकते हो आप संकेत मिले हैं। एंड नोटिस द डिफरेंस लेवल ऑफ अर्थ, और उसमें आप देखेंगे जो लेवल ऑफ अर्थ का जो डिफरेंट लेयर्स दिखाई गई हैं, उन लेयर्स को आप देखेंगे तो वो अलग अलग आपको शो हो रही है। एंड ईच ऑफ दीज रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल फेजेज, और वो अलग अलग जियोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं अर्थ पर उनको वो शो करती हैं। तो इस तरह से आपका जो ये होता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस। अब हम देखते हैं जो इसका सेकंड सब डिवीज़न हुआ है वो है आपका होमो। ये भी होमोनिड की ही एक प्रजाति है, जिसमें पहली थी आपकी ऑस्ट्रेलोपैथिकस, जिसको आप बोल सकते हैं लैटिन वर्ड क्या रहा उसका, लैटिन वर्ड था उसका साउथ एंड देन एप। उसी तरह से जो होमो है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि होमो लुकिंग जस्ट लाइक अस, हमारी जैसे दिखता है दिखने में। सो होमो इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग मैन। होमो का मीनिंग क्या हुआ? मैन। एंड although there were women as well, scientists distinguished among sexual types of homo. Several type of homo means several types of homo, तो अलग अलग अर्थ उनमें दिए हैं। हालांकि इनमें महिलाएं भी थी जिन्होंने ये सब बताए हैं। वैज्ञानिक कई प्रकार के होमो के बीच में अंतर करते हैं, और इनमें सबसे मेन अंतर क्या रहा, मेन आप देखते हैं डिफरेंस क्या है। वो डिफरेंस वो है उनका, दे हैव द लार्जर ब्रेन। Australopithecus have the smaller brain and the Homo have the larger brain, jaws with a reduced outward. You see the picture of the Australopithecus, they have the jaws, and outward they have the part of outward jaws, and in the Homo you can see the jaws with a reduced outward, बाहर निकला हुआ उनका जॉ है वो कम है, and portion using and the smaller teeth, and they have the smaller teeth, and the time period of the Homo is the 25 lakh or 2.5 million years ago. So we have two different main difference in this. Now the Homo has a large black teeth and limited dexterity of the hands, and upright walking was also restricted, and as they still spent a lot of time on trees. इन लोगों का अपना टाइम जो था बहुत ज़्यादा ट्रीज़ पर ये अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। एंड दे रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स सूटेड ऑफ लाइफ ऑन ट्रीज़। उनकी जो, क्योंकि जनरली वो लोग ट्रीज़ पर ही अपना टाइम स्पेंड किया करते थे, सर्वाइव करते थे। सो दे हैव द सच एज लॉन्ग फॉर्लिम्स, कर्व्ड हैंड्स एंड फुट बोन्स एंड मोबाइल एंकल जॉइंट्स, ताकि वो इजीली एक पेड़ से दूसरे ट्री से पर जा सके। एंड ओवर टाइम एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज, जैसे जैसे टाइम बीता उन लोगों ने अपना डेवलपमेंट शुरू किया, और इस डेवलपमेंट को आज हम अपने टाइम में देख सकते हैं कि किस तरह से इनका डेवलपमेंट हुआ है। सो in this video we know about the three different types of different stages of first primates, second hominoids, third hominids, and fourth modern people. How we pass the journey from the years ago, from the long years ago, and now we stand like today modern person. Thank you for all. Thank you.